Good afternoon, all of you. This is Dr. Ayesha Butalia. I welcome you all for today's session. This is session number 7 on Java programming, bridge course. And till now, we have covered how to install Java using command prompt, IDs, syntax, comments, variables, data type. Okay, so now this session would be taking two small topics, Java typecasting and operators. And I recommend you this website given w3schools.com, where you've got a couple of languages you can study. So we are continuing with that. The prerequisite of the course was that you know C and C++. So these two topics would be very simple to you, okay, considering you know that. So as we know, moving ahead, let's get started to Java typecasting. As the name suggests, Java, so we are doing for the Java programming language specifically here. Type, so there are data types, int, float, char, just now we discussed in session 5. So there are 8 data types, 7 data types plus 8 data types, and the 9th one was string, okay, which is a non-primitive data type, but it is very useful, similar to a primitive data type, very strongly used. Then we had non-primitive data types as array, class, okay. So interface, primitive data types were int, float, char, double, long, string, boolean, etc. So types, data types, casting. Casting means actually it is converting, okay, it is converting. So there are two types of casting. So basically typecasting is to assign value of one primitive type to another. For example, if you have a int I say equal to 4, okay, and you have float f equal to 8.2, right? So if I say I is equal to f, this will definitely give me an error because float requires say 4 bytes for a 32-bit processor and integer requires 2 bytes for a 32-bit processor. So obviously 4 bytes का data 2 bytes में जाएगा नहीं, तो वो error होगा, ठीक है. लेकिन अगर if sorry, this won't yes, this will give an error क्योंकि 4 bytes का data 2 bytes मिलेगा. लेकिन if I say f is equal to I, so this will not give an error. Why? Because 2 bytes का data 4 bytes में जा सकता है. तो सपोज I4 है, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, यहाँ पे f 4.0 करके स्टोर हो जाएगा. So this 4.0 again requires 4 bytes, लेकिन data would be exactly same what is of I. कुछ कंपाइलर्स ये भी अलाउ करते हैं I is equal to f, जहां पे वो क्या करते हैं, ट्रंकेट कर देते हैं. तो I will only be get as I, but ultimately this should not be allowed, right? Because उसमें आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो रहा है. Because 8.2 should not actually mean 8, because it makes a lot of difference in some of the mathematical calculations. So this should not be allowed. But suppose if you are allowing something like this, you need to typecast. For example, if you are allowing this, so you can put here as int. तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली आप कंपाइलर को बोल रहे हो कि इस फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करो, और अगर ऑब्वियसली आप इसको इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो उसको ट्रंकेट कर देगा. कुछ कंपाइलर्स ऐसे भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स एक्चुअली. आप ट्रायल एंड एरर करके देखो तो यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट. अगर सपोज ये 8.6 है तो हो सकता है कि इसको ट्रंकेट करने गए राउंड ऑफ करके भी ये 9 भी हो सकता है. दिस यू ट्राई एंड फाइंड आउट यूजिंग printf, scanf. आप यूजर से डेटा लीजिए, उसको प्रिंट करिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क होता है. बट अल्टीमेटली द मेन फंडामेंटल इज दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर, क्योंकि ये इंट है और ये फ्लोट है. तो इसको अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा. और टाइपकास्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसको इससे पहले मेंशन कीजिए ओपन एंड क्लोज ब्रेस, जो राउंड ब्रेसेस होते हैं, और उसमें जो टाइप उसको टाइपकास्ट करना है. तो ऑब्वियसली ये इंटीजर है तो यहाँ पे इंटीजर ही टाइपकास्ट होगा. अगर यहाँ पे हमें फ्लोट में डालना है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे फ्लोट पे टाइपकास्ट करना है. अगर आप एक कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे आप ASCII वैल्यू भी कर सकते हैं. तो C is equal to
I अगर आप करेंगे तो मे बी दिस विल गिव एन एरर, बट इफ यू जस्ट टाइप कास्ट एज सी तो वो इंटीजर को एज कैरेक्टर वैल्यू जो उसकी एसोसिएटेड होती है वो कन्वर्ट कर लेगा, या वाइस वर्सा। अगर आप i इज इक्वल टू सी बोलेंगे तो फिर वो उसकी x की वैल्यू में उसको कन्वर्ट करेगा। Okay, so this is basically your type casting. So widening casting, it is done automatically. जैसे मैंने अभी कहा कि वो अगर आपको converting a smaller type, okay, to a larger type, this is done automatically. So converting a smaller type to a larger type, it is done automatically. क्योंकि byte को short में convert किया, short को char में, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर 4.2 है तो आप उसको truncate करके 4 कर दो। बट नैरोइंग कास्टिंग हैज टू बी डन मैन्युअली, मींस अगर कोई लार्जर टाइप को आपको स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या होगा कि आपका डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो कन्वर्टिंग अ लार्जर इनटू स्मॉलर, कन्वर्टिंग अ लार्जर इनटू स्मॉलर, ये प्रॉब्लमैटिक क्यों होगा? क्योंकि 8.6 को 9 हो जाएगा। तो 8.6 और 9 में फर्क होता है, इसलिए अगर आप स्पेसिफिकली लोगे तो ही वो कंपाइलर लेगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन स्मॉलर टू अ लार्जर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेटा फिर भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 and 4.0 इज वन एंड द सेम थिंग मैथमेटिकली। तो इसीलिए वाइडनिंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, नैरोइंग कास्टिंग ऑटोमेटिकली नहीं होती, आपको स्पेसिफिकली करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं अगर मेंशन करूं तो this is narrowing. Okay, casting. Whereas this one is widening casting. So widening casting is done automatically. I hope this is clear. So widening casting का example दिया है, जैसे मैंने white board पे बताया, same 9, तो यहाँ पे int 9 दिया हुआ है, double my int है. So obviously this is a smaller getting converted into bigger. So this is a widening example. And then if अगर आप mind करते हो तो 9 हो जाएगा, my double करते हो तो 9.0 हो जाएगा. Okay, so this is automatic casting. फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बाइट्स का 4 बाइट्स का डेटा 64 बिट प्रोसेसर है, तो 4 बाइट्स का डेटा 8 बाइट में तो आराम से घुस सकता है, और 9 और 9.0 में फर्क भी नहीं होगा। सो दिस इज वाइडनिंग कास्टिंग एंड डन ऑटोमेटिकली। नैरोइंग कास्टिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि डबल 9.78 बी है एंड इंटीजर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। तो नैरोइंग कास्टिंग इज लार्जर इनटू स्मॉलर, तो यहाँ स्पेसिफिकली इंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर 9.7 दिया तो ये ट्रंकेट होके 9, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये राउंड ऑफ नहीं करता है, ये सिर्फ ट्रंकेट कर देता है। तो राउंड ऑफ में क्या होता था, ये 10 हो जाता था, बिकॉज 9.5 के ऊपर वाला गेट्स राउंड ऑफ टू 10, बट हियर इट इज क्लियरली शोइंग दैट जावा यूजेस ट्रंकेशन। ट्रंकेशन मीन सिर्फ डेसिमल को हटा दो, यहाँ का पहले वाला पार्ट 9 है तो आपको 9 एज एन आउटपुट हो जाएगा। So here you get the value as 9.7 and 9. So this is what to be highlighted, that truncation हो रहा है। So now the next topic is Java operators. So Java operators जैसे हम normally operator use करते हैं, plus, minus, multiplication, division, C और C++ में, these are called operators. So operators are used to perform operations on variables and values. Okay, so variables can vary, but values can be constant. You can use plus operator together to add two values. So if you already know C and C++, this topic is very childish to you. So int x is equal to 100 plus 50. तो obviously क्या print होगा 150, because this is addition on the values. ठीक है, तो आप ये this is another example, यहाँ पे values पे हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और एक दोनों यहाँ पे वेरिएबल्स है। सो नथिंग डिफिकल्ट। सो जावा डिवाइड्स द ऑपरेटर इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। यू हैव गॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस। यू हैव गॉट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यू हैव गॉट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यू हैव गॉट लॉजिकल, एंड यू हैव गॉट बिटवाइज। सो दीज आर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो एडिशन, subtraction, multiplication with asterisk sign,
division by slash sign percentage. So this is a modulus. So this actually means x divided by y, and whatever is the remainder, you will get it after using mod. And we all know that mod functions, since it is assumed that you know C and C++, so mod functions, it works on integers only. क्योंकि float में तो floating point है तो आपको decimal में answer मिल जाएगा, आपको remainder नहीं मिलेगा. So this basically modulus function is used on the integers. Now next is your plus plus, that is increment. Okay, so plus plus x. This means x is equal to x plus 1. Minus minus is a decrement operator. So it means x is equal to x minus 1. तो सिर्फ minus 1 के लिए ही आपके पास operators है. There is nothing called as x is equal to x plus 2 के लिए कोई operator नहीं है. You have to write x is equal to x plus 2. But x is equal to x plus 1 के लिए आप directly x plus plus लिख सकते हो. So the next category is the, after arithmetic, is the assignment operators. So let's see the assignment operators. So equal to sign is an assignment operator. There is another called addition assignment operator. So this is plus equal to. So plus equal to means x is equal to x plus 5. So here x is 10. So x is equal to x plus 5 means x is equal to 10 plus 5, that is 15. So you get the answer 15. So ultimately x plus is equal to x plus 5 is nothing but x plus is equal to x is equal to x plus 5, as simple as that. So these are the different types of assignment operators. Minus equal to is x is equal to x minus 3. Star equal to will be written like this, but it will actually mean x is equal to x into 3. Slash equal to is written as x slash equal to 3. That means x is equal to x slash 3. Slash means division operator. Similarly is with the modulus function, with the AND operator, with OR operator, with the XOR operator, with assignment operator, left shift operator, right shift operator, and so on. So these are the different types of assignment operators. Of course, you can try it out on this side, each one, so you will be understanding. So if you take the OR operator, x is equal to 5. So here it means x is equal to x or 3. So 5/3. So what is the answer? 7. Okay. So similarly, you have comparison operators. To go into more into detail of these operators, I've got a special video on, how to calculate all these bitwise operations, because plus minus into slash is easy, but I've got a special video on how to work on modulus. I've got a special video on how to work on these bit operators. So I'll share that in the description box and you can go and check out. Okay, so right now we'll stick to the topic, otherwise it will go very lengthy and divert from our main topic. So next type of operator is your comparison operator. So let's check out those. So comparison operators are equal to. So single equal to is an assignment operator, whereas double equal to is a comparison operator. So we compare whether x is equal to y. This is whether it's not equal to y, whether it is greater than, less than, greater than, equal to, or less than. So these all, if you are a C and a C++ programmer, you already know it. So comparison operators are used to compare two values. Okay. So we'll try this out. So here you can directly print the value of x and y also, but you can directly find out the condition. So since we have got a Boolean variable inside Java language, so automatically if this condition is true, so you get the answer here true. Okay. So 5 is greater than or equal to 3, answer is yes. So you have a true over here.
So coming to the next type of operator is logical operator. So let's see those. So logical operator is double and, that is your A and D normal. Then this is OR, and this is logical NOT. These were the bitwise operators, right? These were bitwise operators. That's why I told you see that video, because for that we have to do the left shift and right shift operation depending upon the OR and the AND. Whereas over here, this is normal and OR, and this is not equal to. Okay, so it's logical and, this is logical OR, and this is logical NOT. So it's returned true if both the conditions are true. It returns true if any one of the condition true, क्योंकि OR है इसलिए, and not equal to is reverse the result. Okay, क्योंकि not है तो उसका opposite हो जाएगा. So example, if x is greater than y and x is less than y. So if both them are true, then you will get true. तो यहाँ पे if x is less than 5, तो यहाँ पे 5 से नीचे कोई नंबर होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली ये भी 5 से नीचे ही होना चाहिए क्योंकि एंड है. तो अगर सपोज हम 2x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन ट्रू ही आएगा. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस. यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिया है. ओके, सो इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, यस ट्रू, एंड इज 5 लेस देन 10, यस. सो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, और इसलिए आपको ये पूरा आंसर भी ट्रू मिल रहा है, और इसलिए यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले हो रहा है. सो सिंपल. Similarly, you can do it with logic OR. यहाँ पे x is equal to 5 है. So is 5 greater than 3? Yes. But 5 is less than 3? No. So 1 is true and 1 is false. But in OR operation, if 1 is true and 1 is false, then also the answer is yes. So you get it true. So the last type of logical operator is not equal to. Let's see this example. So x is equal to 5. So here 5 is greater than 3. Yes. Okay. And 5 is less than 10. Yes. So ये जो and है ये दोनों true है, इसलिए and का आपको yes मिलेगा, that is true. लेकिन true का not जब हम निकालेंगे, रिवर्स करेंगे, तो true का not false हो जाएगा, इसलिए you get a false over here. Okay, it's very simple. अगर आपको लग रहा है कि we are going fast, so you can go through this recording again. Okay, but I don't think that if you know already C and C++, this becomes very simple. So the simple exercise, let's do it. Multiply 10 with 5 and print the result. So obviously the operator is star. You get 50. So it's correct. Okay. So you can use the start exercise and you can start practicing on every topic which we have discussed. Okay, so these are the different types of operators we discussed: arithmetic, assignment, comparison, logical. Okay, so bitwise operator, this Java strings we will take in the next session. Okay, but bitwise operators are nothing but which we saw over here. These are the bitwise operators. Okay, so I hope this lecture on typecasting and operators used in Java programming language was useful to you. If you have any doubt, you can ping me on WhatsApp number mentioned in the description, or you can mail me, or you can also write in the comment section. Whatever topics related to this videos, I will always share in the description box, or you can ask me on the mail on whatever topic you want in Java, C, C++, DBMS, machine learning. I would be happy to help you out. So thank you very much for your patience listening. I hope you practice all this exercises giving here, and this is a very handy tutorial website that I've shared to you. Okay, so thank you again for your patience listening. This is Dr. Ayesha Butalia signing off for this session 7 on typecasting and operators. Have a nice day.